backlash. Target is Prime Minister Narendra Modi. In the process, they are willing to do anything to seek revenge, including this bizarre idea of boycotting a national event like the inauguration of the new Parliament building by the Prime Minister of India. Why did Rajiv Gandhi inaugurate the new Parliament Library in 1985? Was he the president? All right, welcome back, and we continue to be with our guest Ratan Sharda, political analyst, author, live with us from Mumbai. We also have Dr. Pradeep Chakravarti, author and historian. I'll come to him for a very important aspect of this whole story and the narrative that's being, or the jousting over a narrative that's happening between the political parties, the ruling and the opposition side. And I'm told Dushyant Sridhar, the Vedic scholar with us, has to go. So I'll come to you for my last question, Mr. Sridhar. This thought that keeps coming to us about the religiosity of the masses, particularly in Tamil Nadu, and the atheist politics of its ruling classes. How do you explain this contradiction in the light of this Sengol Rao? Namaste again. So, at one point in time, the people of the Dravidian ideologue and the ideology were often saying that the Tamil pride, the importance given to the Tamil language, has not been given in the national level. So, they felt a lot suppressed, and this was the narrative that they were giving. But given the current stance of the Honorable Prime Minister, every speech of his, whether it is inside the country or outside the country, countless number of times he has invoked the greatness of the Tamil language, the Tamil culture, and has time and again stressed the importance of the Tamil literature that we have bequeathed, be that of Tirukkural, the Alvars, or the Nayanmars. One. Second thing, he also initiated the Kashi Tamil Sangamam. So he spoke about the greatness of how the Tamil culture and the culture in the Kashi have come together. The beauty is in Kashi, Ganga, which flows from the north to the south, in Kashi, which is Varanasi alone, meanders for a small distance south to north. So that's the greatness, one of the greatness of Kashi. In the south of India, river Kaveri in a place called Mohanur meanders south to north. So it is often referred to as Dakshina Kashi. So there are various ways with which some initiatives have been taken to bring about the unity, the greatness of Kashi Tamil Sangamam. Similarly is the Saurashtra Tamil Sangamam, another beautiful initiative launched to say the greatness, the connection between Gujarat and Tamil Nadu. So, and today, to call it the tiara, the crown of all, the crowning jewel of all contributions, the Sengol from the Tamil land is going to be kept in Lok Sabha, which is the temple of democracy. So now the ideologue, the parties that have been kind of advocating and professing a very fractured ideology have fallen short of words. Initially, they were saying that the Cholas were not recognized. Initially, they were telling that the Tamil culture is not recognized. They were telling that Tamil language is not recognized. Tamil is recognized. Tamil culture is recognized. And above all, it is the Sengol. Now they would say that they have other problems. So I am not getting into the political spectrum at all. I'm not a politician. But today, I'm very proud of my parliament, my building, the way it has been inaugurated with all these beautiful rituals and with all the prayer meeting. I'm extremely, I would like to congratulate all the citizens of our beautiful Bharat Desh. Yeah. I would want to take these thoughts. Thank you so much, Dushyant Sridhar, Vedic scholar, for joining us live. I'm told he has to go. These thoughts I have to take to Pradeep Chakravarti on this battle of narratives. On other occasions, we can discuss whether the Mahatma Gandhi National Rural Employment, Manrega, that is called Employment Guarantee Scheme of the UPA government, whether it is implemented better under the Modi government or was implemented better under the Congress. But we have to discuss about the socio-cultural infrastructure that Modi has created and the narrative building on that. Mr. Chakravarti, stay with us. I have to come back after a short break.
new era of truly international premium schooling is coming to India. Harrow School in the UK, over 450 years, has educated numerous prime ministers, Nobel laureates, royal families, and prominent figures in arts, sciences, and business. Harrow International School is now opening as the most premium co-ed day and boarding school of India in Bengaluru. For admissions to grade 6 onwards, visit harrowbengaluru.in. We, the people of India, must launch a counter movement against this insult to the country. And the hashtag for tonight is My Parliament, My Pride. I can't believe that the opposition intends to now boycott the inauguration of the new Parliament of India. If they do, then they should be ready for a huge backlash. Target is Prime Minister Narendra Modi. In the process, they are willing to do anything to seek revenge, including this bizarre idea of boycotting a national event like the inauguration of the new Parliament building by the Prime Minister of India. Why did Rajiv Gandhi inaugurate the new Parliament Library in 1985? Was he the President of India? The people of this country, 140 crore Indians who elected the Prime Minister of India, have no significance. Are the people of India now less significant than the Vadra Gandhi family who inaugurates everything under the sun in their time? Let us say now we are proud. Let us collectively raise our voices against this dangerous attempt. The day when our new parliament, my new parliament will be inaugurated. Let us therefore make it difficult for those who are insulting the nation by boycotting such an event. Let us also protest against their arrogance. Believe that the opposition intends to now boycott the inauguration of the new Parliament of India. If they do, then they should be ready for a huge backlash. Target is Prime Minister Narendra Modi. In the process, they are willing to do anything to seek revenge, including this. Ever since we launched in 2017, we've been India's #1 news channel, and then we became India's #1 news network. Today we operate the #1 channels in English, in Hindi, and in Bangla, and we're going to expand across India and hopefully very soon to the entire world. Now this journey cannot be complete without us entering the digital news medium in a stronger, effective, and well-planned way. And I'm delighted to share with you, with all of you, our support base, our viewers, our followers, and people who are really part of Republic, that yes, Republic, India's #1 on television, is now coming on digital. This July, Republic will be on digital. Motorola, India's best 5G smartphone brand. Thousands of police personnel have been deployed and multiple layers of barricades put in place in the Lutyens Delhi area as the wrestlers are protesting at Jantar Mantar, about 2 kilometers from the Parliament building. Wrestlers say they will go ahead with the Mahila Mahapanchayat near the new building at any cost. Police, however, said no protester will be allowed to move towards the new building as permission has not been granted to hold the Mahila Mahapanchayat. That's a news alert coming in. All right, welcome back. We continue to have Ratan Sharda and Praveen Chakravarti with us. I'll go to Praveen Chakravarti now. Mr. Chakravarti, just before we went for the break, we were having this conversation about the Modi legacy and the centering of our civilizational values
in that legacy. So it's not the first time Prime Minister is publicly participating in rituals essentially Hindu. He has done that in the case of the Kashi Vishwanath corridor, in the case of Mahakal corridor, with the Somanath temple, with the Kedarnath shrine. So this is a Prime Minister who's not apologetic about owning up to his Hindu past, of his Hindu origin, of the Hindu legacy of this nation. Why is it that some people really find it at odds with the nation building project? Or for that matter, these same people who thought that being Hindu is at odds with the modern Indian nation making project are now cribbing. Not Praveen. Religion is a really personal thing. I think the Prime Minister can follow whatever religion he wants. I think as an individual citizen of India, it's more important that the work gets done in the new parliament. But I want to take a step back and look at how the Skolare Padigam, there are 796 verses from the Tevaram, but they've chosen the Kolare Padigam, and it's important to take a step back to look at why it is so. I think you'll remember that astrologers told Pandit Jawaharlal Nehru that if you take transfer of power during the day, this will be disaster for the country. I think Pakistan ignored that, and which is why they probably... सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार मन की बात का ये एपिसोड सेकंड सेंचुरी का प्रारंभ है। पिछले महीने हम सभी ने इसकी स्पेशल सेंचुरी को सेलिब्रेट किया है। आपकी भागीदारी ही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी ताकत है। 100वें एपिसोड के ब्रॉडकास्ट के समय एक प्रकार से पूरा देश एक सूत्र में बन गया था। हमारे सफाई कर्मी भाई बहन हो या फिर अलग अलग सेक्टर्स के दिग्गज, मन की बात ने सबको एक साथ लाने का काम किया है। आप सभी ने जो आत्मीयता और स्नेह मन की बात के लिए दिखाया है, वो अभूतपूर्व है, भावुक कर देने वाला है। जब मन की बात का प्रसारण हुआ तो उस समय दुनिया के अलग अलग देशों में, अलग अलग टाइम जोन में कहीं शाम हो रही थी तो कहीं देर रात थी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने 100वें एपिसोड को सुनने के लिए समय निकाला। मैंने हजारों मील दूर न्यूजीलैंड का वो वीडियो भी देखा जिसमें 100 वर्ष की एक माताजी अपना आशीर्वाद दे रही हैं। मन की बात को लेकर देश विदेश के लोगों ने अपने विचार रखे हैं। बहुत सारे लोगों ने कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस भी किया है। लोगों ने इस बात को अप्रिशिएट किया है कि मन की बात में देश और देशवासियों की उपलब्धियों की ही चर्चा होती है। मैं एक बार फिर आप सभी को इस आशीर्वाद के लिए पूरे आदर के साथ धन्यवाद देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों हमने मन की बात में काशी तमिल संगमम की बात की, सौराष्ट्र तमिल संगमम की बात की। कुछ समय पहले ही वाराणसी में काशी तेलुगु संगमम भी हुआ। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को ताकत देने वाला ऐसे ही एक और अनूठा प्रयास देश में हुआ है। ये प्रयास है युवा संगम का। मैंने सोचा इस बारे में विस्तार से क्यों ना उन्हीं लोगों से पूछा जाए जो इस अनूठे प्रयास का हिस्सा रहे हैं। इसलिए अभी मेरे साथ फोन पर 2 युवा जुड़े हुए हैं। एक है अरुणाचल प्रदेश के ग्यामर न्योकुम जी और दूसरी बेटी है बिहार की बिटिया विशाखा सिंह जी। आइए पहले हम ग्यामर न्योकुम जी से बात करते हैं। ग्यामर जी नमस्ते। नमस्ते मोदी जी। अच्छा ग्यामर जी, जरा सबसे पहले तो मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ। मोदी जी, सबसे पहले तो मैं आपका और भारत सरकार का बहुत ही ज्यादा आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत कीमती टाइम निकाल के मुझसे बात करने का
मुझे मौका दिया। तो मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट ईयर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रहा हूँ। और परिवार में क्या करते हैं पिताजी वगैरह? जी मेरे पिताजी छोटे मोटे बिजनेस और उसके बाद कुछ फार्मिंग ये सब करते हैं। युवा संगम के लिए आपको पता कैसे चला? युवा संगम में गए कहाँ, कैसे गए, क्या हुआ? मोदी जी मुझे युवा संगम का हमारे जो इंस्टीट्यूशन है जो NIT है उन्होंने हमें बताया था कि आप इसमें भाग ले सकते हैं। तो मैंने फिर थोड़ा इंटरनेट में थोड़ा खोज किया, फिर मुझे पता चला कि ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसमें मुझे एक भारत श्रेष्ठ भारत ना जो विजन है उसमें भी बहुत ही योगदान दे सकते हैं और मुझे कुछ नया चीज जानने का मौका मिलेगा ना। तो तुरंत मैंने फिर उसमें वेबसाइट में जाके एनरोल किया। मेरा अनुभव बहुत ही मजेदार रहा, बहुत ही अच्छा था। कोई सिलेक्शन आपको करना था? मोदी जी जब वेबसाइट खोला था अरुणाचल वालों के लिए 2 ऑप्शन था। पहला था आंध्र प्रदेश जिसमें IIT तिरुपति था और दूसरा था सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान। तो मैंने राजस्थान में किया था अपना फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकंड प्रेफरेंस मैंने IIT तिरुपति किया था। तो मुझे राजस्थान के लिए सेलेक्ट हुआ था, तो मैं राजस्थान गया था। कैसा रहा आपका राजस्थान यात्रा? आप पहली बार राजस्थान गए थे? हाँ, मैं पहली बार अरुणाचल से बाहर गया था। मैंने तो जो राजस्थान की किले ये सब तो मैंने बस फिल्म और फोन में ही देखा था ना। तो मैंने जब पहली बार गया तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही, वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे और जो हमें ट्रीटमेंट दिया बहुत ही ज्यादा अच्छा था और जो हमें नया नया चीज सीखने को मिला। मुझे राजस्थान के बारे की और उधर के लोग जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत कुछ नया नया चीज सीखने को मिला जो मुझे बिल्कुल ही मालूम नहीं था। तो ये प्रोग्राम मुझे बहुत ही अच्छा था राजस्थान का विजिट। देखिए, आपको तो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि अरुणाचल में भी वीरों की भूमि है, राजस्थान भी वीरों की भूमि है और राजस्थान से सेना में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। और अरुणाचल में सीमा पर जो सैनिक है उसमें जब भी राजस्थान के लोग मिलेंगे तो आप जरूर उनसे बात करेंगे कि देखिए मैं राजस्थान गया था, ऐसा अनुभव था, तो आपकी तो निकटता एकदम से बढ़ जाएगी। अच्छा, आपको वहां कोई समानताएं भी ध्यान में आई होगी? आपको लगता होगा हाँ यार ये अरुणाचल में भी तो ऐसा ही है। मोदी जी मुझे जो एक समानता मुझे मिली ना वो थी कि जो देश प्रेम है ना और जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो विजन और जो फीलिंग जो मुझे देखा, क्योंकि अरुणाचल में भी लोग अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि वो भारतीय है और राजस्थान में भी लोग अपने मातृभूमि के लिए बहुत जो गर्व महसूस होता है वो चीज मुझे बहुत ही ज्यादा नजर आया। और स्पेशली जो युवा पीढ़ी है ना, क्योंकि मैंने उधर में बहुत सारे युवा के साथ इंटरेक्ट और बातचीत किया ना, तो वो चीज मुझे बहुत सिमिलरिटी नजर आया जो कि वो चाहते हैं कि भारत के लिए जो कुछ करने का और जो अपने देश के लिए प्रेम है ना, वो चीज मुझे बहुत ही दोनों ही राज्य में बहुत सिमिलरिटी नजर आया। तो वहाँ जो मित्र मिले हैं मुझसे परिचय बढ़ाया कि आकर के भूल गए? नहीं, हमने बढ़ाया, परिचय किया। हाँ, तो आप सोशल मीडिया में एक्टिव हैं? जी मोदी जी में एक्टिव हो। तो आपने ब्लॉग लिखना चाहिए अपना, ये युवा संगम का अनुभव कैसा रहा, आपने उसमें एनरोल कैसे किया, राजस्थान में अनुभव कैसा रहा, ताकि देश भर के युवाओं को पता चले कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का महात्म्य क्या है, ये योजना क्या है, उसका फायदा युवा कैसे ले सकते हैं। पूरा अपने एक्सपीरियंस का ब्लॉग लिखना चाहिए, तो बहुत लोगों को पढ़ने के लिए काम आएगा। जी मैं जरूर करूंगा। ग्यामर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप सब युवा देश के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि ये 25 साल अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके जीवन के भी और देश के जीवन के भी। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मोदी, आपको भी। नमस्कार भैया। साथियों, अरुणाचल के लोग इतनी आत्मीयता से भरे होते हैं कि उनसे बात करते हुए मुझे बहुत आनंद आता है। युवा संगम में ग्यामर जी का अनुभव तो बेहतरीन रहा। आइए अब बिहार की बेटी विशाखा सिंह जी से बात करते हैं। विशाखा जी नमस्कार। सर्वप्रथम तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा प्रणाम और मेरे साथ सभी डेलीगेट्स की तरफ से आपको बहुत बहुत प्रणाम। अच्छा विशाखा जी, पहले अपने बारे में बताइए, फिर मुझे युवा संगम के विषय में भी जानना है। मैं बिहार के सासाराम नाम के शहर की निवासी हूँ और मुझे युवा संगम के बारे में मेरे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज के थ्रू पता चला था सबसे पहले। तो उसके बाद फिर मैंने पता करा इसके बारे में और डिटेल निकाली कि ये क्या है। तो मुझे पता चला कि ये प्रधानमंत्री जी की एक स्कीम एक भारत श्रेष्ठ भारत के थ्रू युवा संगम है। तो उसके बाद मैंने अप्लाई करा और जब मैंने अप्लाई करा तो
मैं एक्साइटेड थी इसमें ज्वाइन होने के लिए, लेकिन जब मैं वहां से घूम के तमिलनाडु जाके वापस आई, तो वो जो एक्सपोजर मैंने गेन किया, उसके बाद मुझे अभी बहुत ज्यादा ऐसा प्राउड फील होता है दैट आई हैव बीन द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है उस प्रोग्राम में पार्ट लेने की, और मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ आपका कि आपने हमारे जैसे युवाओं के लिए इतना बेहतरीन प्रोग्राम बनाया जिससे हम भारत के विभिन्न भागों के कल्चर को अडेप्ट कर सकते हैं। विशाखा जी, आप क्या पढ़ती हैं? मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। अच्छा विशाखा जी, आपने किस राज्य में जाना है, कहाँ जुड़ना है, वो निर्णय कैसे किया? जब मैंने ये युवा संगम के बारे में सर्च करना शुरू किया गूगल पे, तभी मुझे पता चल गया था कि बिहार के डेलीगेट्स को तमिलनाडु के डेलीगेट्स के साथ एक्सचेंज किया जा रहा है। तमिलनाडु काफी रिच कल्चरल स्टेट है हमारे कंट्री का, तो उस टाइम भी मैंने जब ये जाना, ये देखा कि बिहार वालों को तमिलनाडु भेजा जा रहा है, तो इसने भी मुझे बहुत ज्यादा मदद किया ये डिसीजन लेने में कि मुझे फॉर्म फिल करना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए या नहीं। और मैं सच में आज बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैंने इसमें पार्ट लिया, और मुझे बहुत खुशी है। आपका पहली बार जाना हुआ तमिलनाडु? जी, मैं पहली बार गई थी। अच्छा, कोई खास यादगार चीज अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे? देश के युवा सुन रहे हैं आपको। जी, पूरा जर्नी माने तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहा है। एक एक पड़ाव पे हमने बहुत सारी अच्छी चीजें सीखी हैं। मैंने तमिलनाडु में जाके अच्छे दोस्त बनाए हैं, वहाँ के कल्चर को अडेप्ट किया है, वहाँ के लोगों से मिली मैं। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी चीज जो मुझे लगी वहाँ पे, वो पहली चीज तो ये कि किसी को भी मौका नहीं मिलता है इसरो में जाने का, और हम डेलीगेट्स थे तो हमें ये मौका मिला था कि हम इसरो में जाएं। प्लस दूसरी बात सबसे अच्छी थी वो थी जब हम राजभवन में गए और हम तमिलनाडु के राज्यपाल जी से मिले, तो वो 2 मोमेंट जो था वो मेरे लिए काफी सही था। मुझे ऐसा लगता है कि जिस एज में हम हैं एज अ यूथ, हमें वो मौका नहीं मिल पाता जो कि युवा संगम के थ्रू मिला है, तो ये काफी सही और सबसे यादगार मोमेंट था मेरे लिए। बिहार में तो खाने का तरीका अलग है, तमिलनाडु में खाने का तरीका अलग है जी, तो वो सेट हो गया था पूरी तरह? वहाँ जब हम लोग गए थे तो साउथ इंडियन क्विजीन है वहाँ पे तमिलनाडु में, तो जैसे ही हम लोग गए थे तो वहाँ जाते के साथ हमें डोसा, इडली, सांभर, उत्तपम, वड़ा, उपमा ये सब सर्व किया गया था। तो पहले जब हमने ट्राई करा तो दैट वाज टू गुड। वहाँ का खाना जो है वो बहुत ही हेल्दी है, एक्चुअली बहुत ही ज्यादा टेस्ट में भी बेहतरीन है और हमारे नॉर्थ के खाने से बहुत ही ज्यादा अलग है। तो मुझे वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा लगा और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे लगे। अब तो दोस्त भी बन गए होंगे तमिलनाडु में? जी जी, वहाँ पे हम रुके थे NIT त्रिची में, उसके बाद IIT मद्रास में, तो उन दोनों जगह के स्टूडेंट से तो मेरी दोस्ती हो गई है। प्लस बीच में एक CII का वेलकम सेरेमनी था, तो वहाँ पे वहाँ के आसपास के कॉलेज के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे, तो वहाँ हमने उन स्टूडेंट से भी इंटरेक्ट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा उन लोगों से मिलकर। काफी लोग तो मेरे दोस्त भी हैं और कुछ डेलीगेट से भी मिले थे जो तमिलनाडु के डेलीगेट बिहार आ रहे थे, तो हमारी बातचीत उनसे भी हुई थी और हम अभी भी आपस में बात करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो विशाखा जी, आप एक ब्लॉग लिखिए और सोशल मीडिया पे ये आपको पूरा अनुभव, एक तो इस युवा संगम का, फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत का, और फिर तमिलनाडु में अपनापन जो मिला, जो आपको स्वागत सत्कार हुआ, तमिल लोगों का प्यार मिला, ये सारी चीजें देश को बताइए। आप तो लिखोगे आप? जी जरूर। तो मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार। ग्यामर और विशाखा, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवा संगम में आपने जो सीखा है वो जीवन पर्यंत आपके साथ रहे, यही मेरी आप सबके प्रति शुभकामना है। साथियों, भारत की शक्ति इसकी विविधता में है। हमारे देश में देखने के लिए बहुत कुछ है। इसी को देखते हुए एजुकेशन मिनिस्ट्री ने युवा संगम नाम से एक बेहतरीन पहल की है। इस पहल का उद्देश्य पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ाने के साथ ही देश के युवाओं को आपस में घुलने मिलने का मौका देना। विभिन्न राज्यों के उच्च शिक्षा संस्थानों को इससे जोड़ा गया है। युवा संगम में युवा दूसरे राज्यों के शहरों और गांवों में जाते हैं। उन्हें अलग अलग तरह के लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है।
युवा संगम के फर्स्ट राउंड में लगभग 1200 युवा देश के 22 राज्यों का दौरा कर चुके हैं। जो भी युवा इसका हिस्सा बने हैं वे अपने साथ ऐसी यादें लेकर वापस लौट रहे हैं जो जीवन भर उनके हृदय में बसी रहेगी। हमने देखा है कि कई बड़ी कंपनियों के सीईओ, बिजनेस लीडर्स, उन्होंने बैग पैकर्स की तरह भारत में समय गुजारा है। मैं जब दूसरे देशों के लीडर से मिलता हूं तो कई बार वो भी बताते हैं कि वो अपनी युवावस्था में भारत घूमने के लिए गए थे। हमारे भारत में इतना कुछ जानने और देखने के लिए है कि आपकी उत्सुकता हर बार बढ़ती ही जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इन रोमांचक अनुभवों को जानकर आप भी देश के अलग अलग हिस्सों की यात्रा के लिए जरूर प्रेरित होंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ दिनों पहले ही मैं जापान में हिरोशिमा में था। वहां मुझे हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूजियम में जाने का अवसर मिला। यह एक भावुक कर देने वाला अनुभव था। जब हम इतिहास की यादों को संजोकर रखते हैं तो वो आने वाली पीढ़ियों की बहुत मदद करता है। कई बार म्यूजियम में हमें नए सबक मिलते हैं तो कई बार हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ दिन पहले ही भारत में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का भी आयोजन किया था। इसमें दुनिया के 1200 से अधिक म्यूजियम की विशेषताओं को दर्शाया गया। हमारे यहाँ भारत में अलग अलग प्रकार के ऐसे कई म्यूजियम्स हैं जो हमारे अतीत से जुड़े अनेक पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं। जैसे गुरुग्राम में एक अनोखा संग्रहालय है म्यूजियो कैमरा। इसमें 1860 के बाद के 8000 से ज्यादा कैमरों का कलेक्शन मौजूद है। तमिलनाडु के म्यूजियम ऑफ पॉसिबिलिटीज को हमारे दिव्यांगजनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय एक ऐसा म्यूजियम है जिसमें 70,000 से भी अधिक चीजें संरक्षित की गई हैं। साल 2010 में स्थापित इंडियन मेमोरी प्रोजेक्ट एक तरह का ऑनलाइन म्यूजियम है। ये जो दुनिया भर से भेजी गई तस्वीरों और कहानियों के माध्यम से भारत के गौरवशाली इतिहास की कड़ियों को जोड़ने में जुटा है। विभाजन की विभीषिका से जुड़ी स्मृतियों को भी सामने लाने का प्रयास किया गया है। बीते वर्षों में भी हमने भारत में नए नए तरह के म्यूजियम और मेमोरियल बनते देखे हैं। स्वाधीनता संग्राम में आदिवासी भाई बहनों के योगदान को समर्पित 10 नए म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में विप्लवी भारत गैलरी हो या फिर जलियांवाला बाग मेमोरियल का पुनरुद्धार, देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को समर्पित पीएम म्यूजियम भी आज दिल्ली की शोभा बढ़ा रहा है। दिल्ली में ही नेशनल वॉर मेमोरियल और पुलिस मेमोरियल में हर रोज अनेकों लोग शहीदों को नमन करने आते हैं। ऐतिहासिक दांडी यात्रा को समर्पित दांडी मेमोरियल हो या फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी म्यूजियम, खैर मुझे यहीं रुक जाना पड़ेगा क्योंकि देश भर में म्यूजियम्स की लिस्ट काफी लंबी है और पहली बार देश में सभी म्यूजियम्स के बारे में जरूरी जानकारियों को कंपाइल भी किया गया है। म्यूजियम किस थीम पर आधारित है, वहां किस तरह की वस्तुएं रखी हैं, वहां की कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, ये सब कुछ एक ऑनलाइन डायरेक्टरी में समाहित है। मेरा आपसे आग्रह है कि आपको जब भी मौका मिले अपने देश के इन म्यूजियम्स को देखने जरूर जाएं। आप वहां की आकर्षक तस्वीरों को #म्यूजियम मेमोरीज पर शेयर करना भी ना भूलें। इससे अपनी वैभवशाली संस्कृति के साथ हम भारतीयों का जुड़ाव और मजबूत होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सब ने एक कहावत कई बार सुनी होगी, बार बार सुनी होगी, बिन पानी सब सून,
बिना पानी जीवन पर संकट तो रहता ही है, व्यक्ति और देश का विकास भी ठप पड़ जाता है। भविष्य की इसी चुनौती को देखते हुए आज देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है। हमारे अमृत सरोवर इसलिए विशेष हैं क्योंकि ये आजादी के अमृत काल में बन रहे हैं और इसमें लोगों का अमृत प्रयास लगा है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अब तक 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण भी हो चुका है। ये जल संरक्षण की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। साथियों, हम हर गर्मी में इसी तरह पानी से जुड़ी चुनौतियों के बारे में बात करते रहते हैं। इस बार भी हम इस विषय को लेंगे, लेकिन इस बार चर्चा करेंगे जल संरक्षण से जुड़े स्टार्टअप्स की। एक स्टार्टअप है फ्लॉक्स जैन। ये स्टार्टअप आईओटी एनेबल्ड तकनीक के जरिए वाटर मैनेजमेंट के विकल्प देता है। ये टेक्नोलॉजी पानी के इस्तेमाल के पैटर्न्स बताएगा और पानी के प्रभावी इस्तेमाल में मदद करेगा। एक और स्टार्टअप है लिव एंड सेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित प्लेटफॉर्म है। इसकी मदद से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रभावी निगरानी की जा सकेगी। इससे ये भी पता चल सकेगा कि कहां कितना पानी बर्बाद हो रहा है। एक और स्टार्टअप है कुंभी कागज। ये कुंभी कागज ऐसा विषय है, मुझे पक्का विश्वास है आपको भी बहुत पसंद आएगा। कुंभी कागज स्टार्टअप उसने एक विशेष काम शुरू किया है। वे जल कुंभी से कागज बनाने का काम कर रहे हैं। यानी जो जलकुंभी कभी जल स्रोतों के लिए एक समस्या समझी जाती थी, उसी से अब कागज बनने लगा है। साथियों, कई युवा अगर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के जरिए काम कर रहे हैं, तो कई युवा ऐसे भी हैं जो समाज को जागरूक करने के मिशन में भी लगे हुए हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में बालोद जिले के युवा हैं। यहाँ के युवाओं ने पानी बचाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। ये घर घर जाकर लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक करते हैं। कहीं शादी ब्याह जैसा कोई आयोजन होता है तो युवाओं का ये ग्रुप वहां जाकर पानी का दुरुपयोग कैसे रोका जा सकता है, इसकी जानकारी देता है। पानी के सदुपयोग से जुड़ा एक प्रेरक प्रयास झारखंड के खूंटी जिले में भी हो रहा है। खूंटी में लोगों ने पानी के संकट से निपटने के लिए बोरी बांध का रास्ता निकाला है। बोरी बांध से पानी इकट्ठा होने के कारण यहाँ साग सब्जियां भी पैदा होने लगी हैं। इससे लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है और इलाके की जरूरतें भी पूरी हो रही हैं। जन भागीदारी का कोई भी प्रयास कैसे कई बदलावों को साथ लेकर आता है, खूंटी इसका एक आकर्षक उदाहरण बन गया है। मैं यहाँ के लोगों को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, 1965 के युद्ध के समय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। बाद में अटल जी ने इसमें जय विज्ञान भी जोड़ दिया था। कुछ वर्ष पहले देश के वैज्ञानिकों से बात करते हुए मैंने जय अनुसंधान की बात की थी। मन की बात में आज बात एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसी संस्था की जो जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान इन चारों का ही प्रतिबिंब है। ये सज्जन है महाराष्ट्र के श्रीमान शिवाजी शामराव डोले जी। शिवाजी डोले नासिक जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। वो गरीब आदिवासी किसान परिवार से आते हैं और एक पूर्व सैनिक भी हैं। फौज में रहते हुए उन्होंने अपना जीवन देश के लिए लगाया।
रिटायर होने के बाद उन्होंने कुछ नया सीखने का फैसला किया और एग्रीकल्चर में डिप्लोमा किया। यानी वो जय जवान से जय किसान की तरफ बढ़ चले। अब हर पल उनकी कोशिश यही रहती है कि कैसे कृषि क्षेत्र में अपना अधिक से अधिक योगदान दें। अपने इस अभियान में शिवाजी डोले जी ने 20 लोगों की एक छोटी सी टीम बनाई और कुछ पूर्व सैनिकों को भी इसमें जोड़ा। इसके बाद उनकी इस टीम ने वेंकटेश्वर कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड नाम की एक सहकारी संस्था का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। ये सहकारी संस्था निष्क्रिय पड़ी थी, जिसे रिवाइव करने का बीड़ा उन्होंने उठाया। देखते ही देखते आज वेंकटेश्वर कोऑपरेटिव का विस्तार कई जिलों में हो गया है। आज ये टीम महाराष्ट्र और कर्नाटका में काम कर रही है। इससे करीब 18,000 लोग जुड़े हैं, जिनमें काफी संख्या में हमारे एक्स सर्विसमैन भी हैं। नासिक के मालेगांव में इस टीम के सदस्य 500 एकड़ से ज्यादा जमीन में एग्रो फार्मिंग कर रहे हैं। ये टीम जल संरक्षण के लिए भी कई तालाब भी बनवाने में जुटी है। खास बात यह है कि इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग और डेयरी भी शुरू की है। अब इनके उगाए अंगूरों को यूरोप में भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इस टीम की जो 2 बड़ी विशेषताएं हैं जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया है, वो ये है जय विज्ञान और जय अनुसंधान। इसके सदस्य टेक्नोलॉजी और मॉडर्न एग्रो प्रैक्टिसेस का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं। दूसरी विशेषता यह है कि वे एक्सपोर्ट के लिए जरूरी कई तरह के सर्टिफिकेशन पर भी फोकस कर रहे हैं। सहकार से समृद्धि की भावना के साथ काम कर रही इस टीम की मैं सराहना करता हूं। इस प्रयास से न सिर्फ बड़ी संख्या में लोगों का सशक्तिकरण हुआ है, बल्कि आजीविका के अनेक साधन भी बने हैं। मुझे उम्मीद है कि यह प्रयास मन की बात के हर श्रोता को प्रेरित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 28 मई को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की जयंती है। उनके त्याग, साहस और संकल्प शक्ति से जुड़ी गाथाएं आज भी हम सबको प्रेरित करती हैं। मैं वो दिन भूल नहीं सकता जब मैं अंडमान में उस कोठरी में गया था जहां वीर सावरकर ने काला पानी की सजा काटी थी। वीर सावरकर का व्यक्तित्व दृढ़ता और विशालता से समाहित था। उनके निर्भीक और स्वाभिमानी स्वभाव को गुलामी की मानसिकता बिल्कुल भी रास नहीं आती थी। स्वतंत्रता आंदोलन ही नहीं, सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए भी वीर सावरकर ने जितना कुछ किया उसे आज भी याद किया जाता है। साथियों, कुछ दिन बाद 4 जून को संत कबीरदास जी की भी जयंती है। कबीरदास जी ने जो मार्ग हमें दिखाया है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कबीरदास जी कहते थे, कबीरा कुआं एक है पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है पानी सब में एक। यानी कुएं पर भले भिन्न भिन्न तरह के लोग पानी भरने आए, लेकिन कुआं किसी में भेद नहीं करता। पानी तो सभी बर्तनों में एक ही होता है। संत कबीर ने समाज को बांटने वाली हर कुप्रथा का विरोध किया, समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। आज जब देश विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तो हमें संत कबीर से प्रेरणा लेते हुए समाज को सशक्त करने के अपने प्रयास और बढ़ाने चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपसे देश की एक ऐसी महान हस्ती के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जिन्होंने राजनीति और फिल्म जगत में अपनी अद्भुत प्रतिभा के बल पर अमिट छाप छोड़ी। इस महान हस्ती का नाम है एन टी रामाराव, जिन्हें हम सभी
एनटीआर के नाम से भी जानते हैं। आज एनटीआर की 100वीं जयंती है। अपनी बहुमुखी प्रतिभा के बल पर वो न सिर्फ तेलुगु सिनेमा के महानायक बने, बल्कि उन्होंने करोड़ों लोगों का दिल भी जीता। क्या आपको मालूम है कि उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया था? उन्होंने कई ऐतिहासिक पात्रों को अपने अभिनय के दम पर फिर से जीवंत कर दिया था। भगवान कृष्ण, राम और ऐसी कई अन्य भूमिकाओं में एनटीआर की एक्टिंग को लोगों ने इतना पसंद किया कि लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। एनटीआर ने सिनेमा जगत के साथ साथ राजनीति में भी अपनी अलग पहचान बनाई थी। यहां भी उन्हें लोगों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिला। देश दुनिया में लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले एनटी रामाराव जी को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में इस बार इतना ही। अगली बार कुछ नए विषयों के साथ आपके बीच आऊंगा। तब तक कुछ इलाकों में गर्मी और ज्यादा बढ़ चुकी होगी, कहीं कहीं पर बारिश भी शुरू हो जाएगी। आपको मौसम की हर परिस्थिति में अपनी सेहत का ध्यान रखना है। 21 जून को हम वर्ल्ड योगा डे भी मनाएंगे। उसकी भी देश विदेश में तैयारियां चल रही है। आप इन तैयारियों के बारे में भी अपने मन की बात मुझे लिखते रहिए। किसी और विषय पर कोई और जानकारी अगर आपको मिले तो वो भी मुझे बताइएगा। मेरा प्रयास ज्यादा से ज्यादा सुझावों को मन की बात में लेने का रहेगा। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे अगले महीने। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार। Republic is #1 on television, now soon on digital this July. All right, that was 101st episode of Prime Minister's Fireside Chat, Mann Ki Baat, in which, as always, all-encompassing conversation that the Prime Minister had with the people of the country, speaking about personalities that included Veer Savarkar, whose birth anniversary we mark today, and N.T. Ramarao, the Telugu stalwart leader, and Sant Kabir. Apart from that, he spoke of some youth startups focusing on water conservation. And then he, in fact, spoke to two youngsters, one from Arunachal and one from Bihar, on the experience they had traveling across the country as part of a youth conclave. On that note, let's come back to the story that we are covering today, the big event, the momentous occasion, which is dedication and inauguration of the new parliament building to the nation by the Prime Minister, the formal ceremony for which is to happen just in a few minutes from now, perhaps, as the dignitaries gather in the Lok Sabha chamber of the new parliament building, and the religious ceremony, the consecration of the Sengol and its placement inside the Lok Sabha chamber, which happened in the morning, again by the Prime Minister. On that note, in fact, I am joined by Dr. Padma Subramaniam, artist, dancer, who for the first time perhaps wrote to the Prime Minister, bringing the Sengol issue center stage to the notice of the Prime Minister. Very good morning to you, Ms. Subramaniam. The fact that you, in fact, in many ways began this story which has led to the Sengol becoming center stage insofar as India's new parliament building is concerned. You think this is a matter of history versus civilization? Is it a matter of record versus sentiment? The kind of politics we have seen panning out over the last 1 week since the Sengol story came out with the announcement by the central government? Is it really about sentiments more than history or anything else, or records or anything else?
Well, is history not also sentiment? History also gives us sentiments in life, and it gives a certain emotional content to our life. And it's a historic moment, a time when every Indian must be feeling taller with pride and pray for the golden era of Bharat. Yeah, golden era of Bharat, you said. But the kind of criticism that has happened of the Sengol ceremony, ma'am, you think the opposition is misplaced in its position that they have taken? Also, if you can take us back to the time when you picked up this story from Tughlaq, I believe, and then brought this to the attention of the Prime Minister. And when you did that, what was the first response from the Prime Minister? Well, I must say that I didn't get a reply immediately from the Prime Minister's office. It took some time, probably because they were doing some research to see what kind of evidence they get for whatever has been said in the article and in my translation. And Ministry of Culture, through the IGNCA, had done the spade work, and they found enough evidence, and that's how this is now just not taking some space in the 75th year celebration of our independence, but Sengol has a permanent place. It's like amending what was, almost a sin that was committed for 75 years, not caring for a very holy object. I call it holy because not only because of any religious connotation, but it is extremely important to record history, and this is a symbol of the transformation of power from the British Raj to the Indian government, and this should have taken a right place in the history books. I never studied, I am a student of history, but I never had a chance to see it mentioned in any history book, even in Tamil. So I feel extremely elated that my letter triggered to such extent that the Sengol is finding the right place in the new parliament building. Probably it will inspire generations of members of parliament to be honest, straight, uncompromisingly straight, like the straight rod that you see in the Sengol. Yeah, and this interesting bit of information that you are sharing, ma'am, the fact that when you brought it to the notice of the Prime Minister's office, the response was not immediate or political. There was a due diligence that was put in place. There was proper research that was done on this subject, and subsequently a decision was taken that yes, this is a crucial piece of history missing from our living memory, and that it needs to be restored. Yeah. It was not as though somebody was very keen on bringing out something in a, just to catch the eye of the public and make use of it in a different way with some hidden agenda. It was not like that. A proper research had been done on the evidences, and that's how it has stood the time, stood the misgivings of people not understanding. I think there has not been proper understanding of the whole thing. Those who are against it today
are going to be sitting inside the parliament. It's not as though they can avoid the parliament forever. And even if they don't want to look into the significance of the object, there are so many beautiful artifacts around. Are they not going to have a sense to enjoy, a piece of art to the eyes? And like music, when you listen to music, whether you understand or not is not important. But if you have a sense for music, you enjoy music. So even take it as as a symbol, or that was given 75 years ago, and it is part of history. So there's nothing more to grieve about or be angry about. No suspicion is necessary. That's a very crucial aspect of the story you are bringing out, ma'am, that there was no politics involved. You as a citizen picked up this from a Tamil press publication, and then you forwarded it to the Prime Minister's office, which did its due diligence. There was no political thought to it. And then after due diligence, a thought came that, yes, this is something which should be brought back center stage, and that's why it was done. So it was not the kind of political narrative that's being pushed by the opposition on a certain Hindu agenda being brought in through the Sengol. On that note, thank you so much, Ms. Padma Subramaniam, the artist from Chennai, Tamil Nadu, who brought Sengol first to the notice of Prime Minister's office, which has led to finally the Sengol finding its rightful pride of place in the new Lok Sabha building. Thank you so much, ma'am, for joining us. On that note, a short break. On the other side, we go back to the actual inauguration ceremony of the new Parliament building. For 6 years, you've trusted Republic TV with breaking news, views and debates. For the very first time, we're bringing #1 news brand on digital. Stay tuned for Republic Digital this July. A new era of truly international premium schooling is coming to India. Harrow School in the UK, over 450 years, has educated numerous prime ministers, Nobel laureates, royal families, and prominent figures in arts, sciences, and business. Harrow International School is now opening as the most premium co-ed day and boarding school of India in Bengaluru. For admissions to grade 6 onwards, visit harrowbengaluru.in. कलाम साहब से मिलना होगा सर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब. Of course, Kalam has been my guru for almost 25 years. I had known Kalam as project director of SLV-3 when he was in the Department of Space. तो हमारे पास उस जमाने में एक रशियन मिसाइल हुआ करता था, SAM-2. हमने अपना इंजन लिया और वो SAM-2 में उसको इंटीग्रेट किया. तो हम श्रीहरिकोटा रेंज से जाके हमने 1982 में जब कलाम साहब आए तब टेस्ट किया. So that was the first time I interacted with Dr. Kalam. Ever since we launched in 2017, we've been India's #1 news channel, and then we became India's #1 news network. Today we operate the #1 channels in English, in Hindi, and in Bangla, and we're going to expand across India and hopefully very soon to the entire world. Now this journey cannot be complete without us entering the digital news medium in a stronger, effective and well-planned way. And I'm delighted to share with you, with all of you, our support base, our viewers, our followers, and people who are really part of Republic, that yes, Republic, India's #1 on television, is now coming on digital. This July, Republic will be on digital. ये जो साइंटिस्ट का सफर है, ये कहाँ से शुरू हो गया? Right from the beginning, I wanted to do something in aeronautics, something where I can exercise my hobby
to launch rockets or do aircraft. मुझे flying objects से बहुत प्यार था. Then I consulted and I realized if I really want to do aeronautics and also rockets, DRDL is the right place to join. Immediately after completing my project work and finishing my Viva, next day I took a train and came to Hyderabad and joined DRDL. All right, welcome back, and we continue our build-up to the inauguration ceremony of the new Parliament building, which would be done in a while from now by the Prime Minister in the presence of dignitaries and, of course, the entire nation watching the momentous occasion. We are joined in by PKD Nambiar, political analyst, also Abhijit Iyer Mitra. But we were having this conversation, Mr. Chakrabarti, with you earlier about Prime Minister Modi's legacy when it comes to socio-cultural infrastructure. The small thing of, for example, renaming Rajpath as Kartavya Path, among others. We take this conversation forward and talk about today's dedication of the Parliament and particularly the placement of Sengol inside the Lok Sabha chamber as part of the larger philosophy or thought of the Prime Minister of center staging the civilizational ethos of India into India's modern day life. I think as a Tamilian and as an Indian, I'm really proud of what has been done today. And they've put a lot of thought into this also. See, if you look at the original Sengol was given only by the Tiruvavadurai Adinam. But today they've called all the other Adinams as well. So they've kept it very broad-based, which is the right way to do it. Also, the reason for singing the Kolara Padigam is important. There are close to 790 or more Tevaram hymns, but they chose this one because it goes back to a historical concept. That many astrologers on the eve of independence pointed out that if we got our independence during the day, it would be disastrous for the country. I guess Pakistan ignored it, which is probably why they are where they are today, but which is why we chose freedom at midnight. And the Kolara Padigam was composed by the Saint Triyana Sambandha when people told him not to travel because of the harmful effects of the Navagraha or the 9 planets at that moment. So the Kolara Padigam is actually about saying if your heart is pure, if your intentions are good, if your deed is honorable, if you are following Dharma, none of the 9 planets, nothing in this world, either divine or ordinary, either living or non-living, can stop you from achieving success. So the choice of the words is very important here. And also what is beautiful is the Kolara Padigam is sung in a pan, not a raga but a pan, which is the Tamil way of music. And the raga for Kolara Padigam is typically derived from the Hindustani raga Navroz. So there's Tamil from the south, there's a raga from the north. It's very beautifully done, very syncretic tradition of India, which is the way it should be done. So I think all of these are symbols to put Tamil, to put Tamil Nadu, to put the south indeed back in the spotlight, equal with the north and with the east and the west as well. Yeah. Abhijit, you see, the fact that Prime Minister, when he lands from his Asia Pacific tour, in the first address he makes at the airport itself, talks about how the kind of pride he felt when he dedicated the Papua New Guinea local language version of Thirukural there when he was there. Prime Minister sort of was the motivation or gave the idea of the Kashi Tamil Sangamam, similarly the Saurashtra Tamil Sangamam. And today when he dedicated or gave that Sengol to the Lok Sabha chamber, he spoke about how Tamil culture is integral to what constitutes India's unity. So Prime Minister is making a big outreach in terms of bridging the north-south divide, and it's being opposed, ironically, by same set of people who accuse North of sort of colonizing the South. But why is that surprising? See, the political agenda is to keep a sort of separate nationality, create this sort of sense of a separate nationality in order to buck all India trends. Now, you go back and look at the Chora emperors. When they go and conquer Bengal, Rajendra Chora brings back water from the Ganga and names his new capital Gangaikonda Chorapuram.
right, which is one of the 4 great Chora temples out there. So there was always this belief that Tamil Nadu was always part, in those days Chora Mandala was always a part of this Indian cultural whole. So many of the Jyotirlingas and things like that are in Tamil Nadu. So it has always culturally been part of India, which has always been sort of the BJP's platform, that there may be linguistic divisions, there may be idea divisions, but ultimately, culturally, we are the same people. And that is exactly what was done. Notice what happened in the ceremony, the visuals of which are showing at the moment. The Shengol, and it's very telling that the Shengol was chosen, that the announcement was made when the Prime Minister comes back from his Asia Pacific trip, highlighting what? Remember, the Chora Navy was the paramount navy of the Indian Ocean at that point of time. They did the first long-range power projection at that particular point, where they, went to... Hello, can you hear me? Yeah, Abhijit, just asking you to stop for a bit your flow of thoughts. We are getting first pictures live from inside the Parliament House, the new Parliament House, the Lok Sabha chamber, which is going to develop as Central Hall also because of its huge capacity, which can seat over 1,200 plus people. And we are seeing the invitees, the dignitaries, the guests taking their seats, taking their place before the ceremony begins. Former Speaker Sumitra Mahajan, for example, in the pictures, among others, most of the sitting Lok Sabha and Rajya Sabha members, of course, apart from former President Ramnath Kovind being greeted by Piyush Goyal, the Union Commerce Minister, and among others, former Prime Minister H.D. Deve Gowda in the pictures. I can see Union Home Minister Amit Shah being greeted by other members of Parliament. Remember, Mohan Bhagwat of the RSS, I can see. No, it's not Mohan Bhagwat. So, these are some of the dignitaries and guests invited, including, of course, the opposition, which has chosen to absent itself. Almost 21 political parties that have decided to boycott the ceremony. And these are pictures we are getting from both inside and outside the Parliament House. We are waiting for the Prime Minister to arrive and for the formal event to begin. If I could give a sense of what's exactly going to happen minute by minute for the benefit of viewers who are joining us now. Prime Minister arrives anytime now, and with the dignitaries seated on the dais, the event begins exactly at 12:05, which is about 15 minutes from now. The national anthem plays out at 12:07. Then there is a welcome address by the Honorable Deputy Chairperson of the Rajya Sabha at 12:10 p.m. After 7 minutes at 12:17 p.m., there would be a screening of 2 movies back to back. Those movies, one in Hindi and English, are essentially on the history of parliamentary democracy in India and the place of the parliament, both the old and the new, in the scheme of things. And that should clear some doubts, at least of the opposition, hopefully. And then at 12:29, after 12 minutes of the screening of those 2 movies, at 12:29 p.m., we're going to see messages read by the Deputy Chairman of Rajya Sabha, of the President of India and the Vice President of India. After which we are going to have an address by the leader of opposition in the Rajya Sabha. You'll have to see whether Mallikarjun Kharge really comes or not. And then there is an address by the Speaker of the House of the Lok Sabha at 12:43 p.m. After which the Prime Minister would be releasing a coin, a commemorative coin and a commemorative stamp, postal stamp, to mark the occasion. The coin would be of ₹75 denomination and the stamp also. And then there would be an address by the Prime Minister to mark the occasion and formally dedicate to the nation the new Parliament building, and that's going to be at 1:10 p.m. After which, once the Prime Minister ends, there would be a vote of thanks by the Secretary General of the Lok Sabha, and that's how the event really pans out. We are waiting for the Prime Minister to arrive. Even the guests
even as the guests, the invitees there in the Lok Sabha chamber of the new parliament building gather. Coming back to the conversation, let me go to PKD Nambiar on that note, and we have one more guest joining us. PKD Nambiar, you think the opposition has really missed out on an important opportunity to at least have their pictures on the day when, if in future, not immediately, if later in future sometime they come to power, they could have, reflected upon this moment and seen themselves in the pictures and have had a sense of ownership to the new parliament and hence to the future political destiny of the country, a stake in it. At least they could have visually connected with that. Just imagine after a few days from now the monsoon session of the parliament is going to start. The people who have called that it is a radical Brahmanic from the Brahmins or Tamil Nadu have come and performed the puja of Samajwadi Party, or the Tejasvi Yadavs, the people who have called it's a coffin kind of a design. Just imagine how their MPs will just walk into this massive pride of India, the new parliament building. Just imagine how they will be able to get into the parliament and sit next to the people. I think they have already lost it. They have lost a big opportunity of being part of the celebration of the nation. Ever since morning, I think we have all been talking about these things, that the whole country is celebrating. Each one is taking this as a pride for themselves. And in that kind of a moment, the major opposition parties are abstaining from such kind of an inauguration without even having a real reason for them. I think it's all about their frustration. They have not been able to do it 50, 60 years of their rule. They could not come up with a massive building or a futuristic or a technologically advanced, cultural value system imbibed building. They could not create it. Today they are feeling the heat that यार हमने नहीं कर पाया, अब ये दूसरा कर रहे हैं, वो मोदी जी इसका सारा credit लेके जा रहे हैं. But in 2.5 years time, if Indian Parliament building has been made only just a mere 1,200 crore rupees, imagine Abhishek, all these 70, 75 years we have lost, not even able to build a parliamentary building of our own. I think it's a remarkable day, and the most important thing is that it is not just an inauguration, but bringing the cultural values, north, south, west, east, doesn't matter. Bharat Varshe, Bharat Kande, that really is the essence of our ancient history. We are not just born in 1947, but we are actual real Sanathan Dharma believing people, and our value system is truly Vasudhaiva Kutumbakam. That is what today is being proved. And the most important part of today is that bringing all the things from the Sengol, which we were talking about in our language, it is called a Tengol. So that is coming all the way and being a part of it. And we are today talking about the righteousness, dharma, and that too in the parliament building inauguration. Isn't it something very great? We have never talked about in our Indian parliamentary system the dharma or Raj Dharma or all those stuff. I think the Prime Minister Modi is on his real Kartavya path, and I think that Kartavya path he is unstoppable. Yeah. And even an opposition is just confused, frustrated, not know how to speak, what to react. Yeah. What is happening today is something which we have never seen in the past. At least I'm 45. I have never seen something like this in the past 45 years of my life. Abhishek. Yeah, PKD, yeah. We have a very contextual guest, I would say, Rajalakshmi Joshi. She's an architect and she joins us live. Ms. Joshi, we have had a tweet from RJD, official Twitter handle of the RJD party, putting a picture of a coffin next to the new parliament building and sort of suggesting that the design looks similar. It's preposterous. It's condemnable that someone in the RJD would think along those lines. But, we have been talking about the old parliament building, the design of which was taken from the Chausat Yogini temple in Morena, Madhya Pradesh by the architects at that time, Herbert Baker and others. So this new parliament building, as an architect,
what is your sense? What does this design really signify? Good morning, Abhishek. And, this is a very momentous historic day. And this tweet by the RJD is an absolute, bad taste. I have absolutely no words to say, it's an abomination. how low the political discourse has fallen. And, I just can't imagine how they could have actually compared this design with that of a coffin. I mean, I don't think anybody else could have imagined that. It's what they have in their mind, and it's probably that it's just a sign of things to come that probably they don't visualize themselves getting into the new parliament. I could only look at it that way. In the earlier old parliament, it was all as per Victorian standards. It was as per European design, and in fact, even the rituals at that time was as per their standards. And today, what we have, I would say, it is more of a Vedic architecture, more of it's a combination of all things that are Indian actually. So it is actually bringing together all the different aspects of from all over India, and it has very beautifully incorporated everything from all across the country. Even in the kind of materials that have been used, if you look at it minutely, each and every corner of India has been covered in the kind of materials that have been used. They are not just green materials, that is eco-friendly materials. There has been a lot of thought to how all these materials are incorporated, and in a very beautiful way. So, from the point of view of design, I would say that a lot of thought has been given to all the different spaces, all the different aspects, all the structural aspects, even the security aspects, and all the services, like all the if you look at how all the seats and the kind of facilities they have, everything has been very well thought of and very well planned. The one very crucial aspect was, in the old Parliament building, there were very, grave security concerns, not just from the point of view of, the literal security. I'm talking about even the fire safety and all those kind of hazards also, because and even the earthquake resistance also. At that time, it was not Delhi was not in that kind of a grave. It was in the zone 2, I assume, and now it is in zone 4. So, a lot of all these aspects have been taken care of, and even the security, like when there was this parliament attack, at that time, those reports, which were not really disclosed to everybody, they actually brought out a lot of problems which the security personnel had to face because of the way in which it was designed. And obviously at that time, there was not much thought given to all these aspects. Terrorism was not such a big factor at that time. But today, all those aspects have been taken care of. We cannot actually get into those details, but all of them have been taken care of. And today, if you actually look into it, all those, the comfort, the security, and even the thought being given to the, like I spoke about, the environment-friendly materials. Now, just look at it, the minuteness with which all of this has been thought. Even the sand that was used, it was not actually sand. It was not the original sand that causes an environmental impact to the riverbed or to the seabed, but this was actually the manufactured sand, that is by crushing of stone. So so this actually, you can imagine the detail to which this has been thought of, and how everything has been very well planned and everything has been taken care of. And I think it is a matter of great pride. All right, Rajlakshmi, hold on to your thoughts. We are getting pictures of Prime Minister's carpet arriving, passing through the Vijay Chowk, and then entering inside the Parliament just in moments. Prime Minister's carpet has arrived at the Parliament complex to inaugurate, with the Prime Minister there to inaugurate the new Parliament building. Pictures coming in live from Vijay Chowk area of the Rayasina Hill, the North Block and the South Block in the backdrop, as the carcade made its way from Lok Kalyan Marg via the Vijay Chowk. These are pictures of the Vijay Chowk, security arrangements in place. That's from where we generally report proceedings of the Parliament House, and that will continue to be the practice. And the
The carcade has made its way inside the Parliament complex. We'll see just in a while Prime Minister being received there by the Speaker and Deputy Chairman of the Rajya Sabha, the Speaker of the Lok Sabha and Deputy Chairman of the Rajya Sabha, the presiding officers of the two houses. They are there in the gallery to receive the Prime Minister as the Prime Minister arrives as per protocol. And from there, they would be going in a procession inside, and then the proceedings would begin. That's the Prime Minister's carcade inside the Parliament House now. That's the Prime Minister's carcade inside the Parliament House now, the new one in the backdrop. And as it slow walks, the SPG slow walks the Prime Minister's car into the lobby, into the foyer actually, from where now we can see the car has arrived and the two presiding officers, Speaker of the Lok Sabha and Deputy Chairman of the Rajya Sabha. Let's go to Shawan Sen. He's there outside the Parliament, in fact, from where these pictures are coming in live. Shawan, over to you. Well, in fact, we're just reporting from the rear side of the Parliament. Not very sure, Abhishek, you'll be able to see much of it. We'll probably have to cut across to the visuals that are basically coming in from the agencies because that gives you a direct view of the Parliament as well as the dignitaries who would be entering. As you were pointing out, as per the schedule, the dignitaries had already arrived around 11:30 this morning, and the Prime Minister finally coming in, and the proceedings thereafter essentially begins. But while all of this is happening, we've had a lot of commentary taking place by political leaders outside the Parliament. In fact, we spoke to a few of the BJP leaders who are basically coming out, and most of them speaking in one voice and saying that this is a historic opportunity that was lost by none other than the opposition parties. They were certainly hoping that the 20 political parties that have boycotted, they would participate in it. But today, when that image basically comes out post 3 o'clock, you would only have some of the parties participating in it. And in the annals of history, remember, that is going to be seen as a lost opportunity even for the opposition parties. Most of them that we spoke to a short while back, essentially indicating that same. And let's not forget, Abhishek, the fact of the matter is that the need of the Parliament, and more importantly, what does it symbolize in today's world when India essentially is galloping? One would certainly see this as the symbol of New India, which represents the aspirations of this country. It is also reflected in the way it has been made. Through the hardships also, let's not forget that this was right in between the pandemic.